Hello friends, we are going to read about the Indian Contract Act 1872. The Indian Contract Act 1872 came into force on 1st September 1872. The word Indian itself says that it is applicable to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. The Indian Contract Act has 266 sections, but तभी ये सबसे simplest act है. अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होता होगा दैट व्हाई डू वी रीड द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द सिंपल कंसेप्ट दैट if any person makes promise he must perform it. If he denies from performing such promise, the law shall compel him to give compensation for the loss suffered due to the non performance of such promise. Indian Contract Act is basically divided into four parts, that is general principles from section 1 to section 75, sales of goods act from section 76 to 126, special kind of contract from section 124 to 238 and partnership act from section 239 to section 266. So now you must be thinking that we do not read Sales of Goods Act and Partnership Act under Indian Contract Act. Okay, yes, you are correct. And this is because they are being made separate acts. Due to the changing scenario, a need arised कि इन दोनों act को separate act बना देना चाहिए. So we have Sales of Goods Act 1930 and Partnership Act 1932. Now your law of contract creates juris in personam and not juris in rem. Now, what is juris in personam? Juris in personam is a lawsuit which is against a specific individual. In personam is distinguished from in rem, which applies to the property or the whole world instead of a specific person. The word contract is derived from the Latin word contractus, which means to work on contract. Okay, so your section 1 talks about the applicability, as we have already studied that it is applicable to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. Section 2, which includes interpretation clause, we'll be reading about interpretation clause in this video itself. Your chapter 1, which is from section 3 to section 9, deals with communication, acceptance and revocation of proposal. Chapter 2 from section 10 to section 30 deals with contract, voidable contract and valid agreements. Chapter 3 from section 31 to section 36 deals with contingent contracts. Chapter 4 from section 37 to section 67 deals with performance of contract. Chapter 5 from section 68 to section 72 deals with certain relations resembling those created by contract. Chapter 6 from section 73 to section 75 deals with consequences of breach of contract. Chapter 7, which is from section 76 to section 123, that is Sales of Goods Act. Will not be reading Sales of Goods Act under Indian Contract Act. Chapter 8, that is from section 124 to section 147, that is indemnity and guarantee. Chapter 9 from section 148 to section 181, which deals with bailment. Chapter 10 from section 182 to section 238, which deals with the concept of agency. Chapter 11, which is from section 239 to section 266, which deals with partnership. We will not be reading partnership as well. Okay, so these are the chapters that we need to cover up, and we'll be reading all these chapters individually in the next videos. Okay, so finally we are on interpretation clause, that is your section 2. Interpretation clause, the definition clause are the most important sections of any act. So I have made few equations so that it becomes easy for you to learn. हम इसे रिवर्स ऑर्डर में रीड करेंगे. दैट इज योर प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट plus enforceability. Okay, so let's try to understand it with the help of the example. Okay, so there was one father and a son on some casual conversation about career and opportunity. So the father said to his son that if you scored 90% in exam,
I'm gonna give you a brand new sports bike. अब बेटा तो खुश हो गया कि अरे वाह 90% स्कोर करने पर न्यू बाइक मिलेगी। एंड वो खुशी खुशी बोलता है कि ठीक है पापा, इस बार तो मैं पक्का 90% स्कोर करूंगा। Since your promise is equal to offer plus acceptance, तो यहाँ पे ऑफर किस चीज का है? ऑफर किस चीज का है? बाइक का। और एक्सेप्टेंस क्या दिया? सन ने एक्सेप्टेंस दिया कि ठीक है मैं 90% स्कोर कर लूंगा। तो हमारा प्रॉमिस बन गया, दैट इज योर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर भी हो गया और उसका एक्सेप्टेंस भी हो गया। सो योर प्रॉमिस इज कंप्लीट। अब बात करते हैं एग्रीमेंट की। तो योर एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। प्रॉमिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। अब कंसिडरेशन क्या है? अब कोई चीज़ फ्री में तो होती नहीं है, तो यहाँ पे फादर के लिए कंसिडरेशन क्या है? फादर के लिए कंसिडरेशन है कि उसका बेटा 90% स्कोर करेगा, और बेटे के लिए कंसिडरेशन क्या है कि फादर उसको बाइक देंगे। तो हमारा कंसिडरेशन क्या है? फादर के लिए 90% और सन के लिए बाइक। तो योर एग्रीमेंट इज ऑल्सो कंप्लीट। एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। Now let's get back to the example again. अब जिस दिन बेटे का रिजल्ट आया एंड ही स्कोर्ड 90%, वो पापा के पास गया कि फादर आई स्कोर्ड 90%, वेयर इज माई बाइक? तो फादर बोलते हैं कौन सी बाइक, कौन सा प्रॉमिस? ऐसा तो कोई प्रॉमिस ही नहीं हुआ था हमारे बीच। तो बेटा बहुत गुस्से में आ गया, बोलता है नहीं पापा, आपने तो मेरे से प्रॉमिस किया था। वो कोर्ट में जाके अपने फादर के खिलाफ केस कर देता है एंड कोर्ट उस केस को रिजेक्ट कर देता है, सेइंग कि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। सो योर डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स एंड सोशल एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट तो हो गया, ठीक है, एग्रीमेंट सही है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, यहाँ पे एग्रीमेंट तो हुआ था, पर इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। इन्फोर्सिबिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। सो फॉर बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू हैव एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, और इन्फोर्सिबिलिटी तभी होगी जब वो एग्रीमेंट डोमेस्टिक एग्रीमेंट या सोशल एग्रीमेंट नहीं होगा। So your contract is equal to agreement plus enforceability. Agreement is equal to promise plus consideration, and promise is equal to offer plus acceptance. Friends, if you find this video helpful, please like and comment, and please don't forget to subscribe Legal Orbis. Bye.